सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के 400। स्पीकर ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर। कर रही हैं ज्वाइन, बोली अभी बात की है। ठीक है सर, आज फोन से ज्वाइन। गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के 478वें हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर इशिता गंजू मैम, और मैम का टॉपिक है रजो निवृत्ति और इसके होम्योपैथिक प्रबंधन के बारे में मैम हमें बताएंगी आज। और इससे पहले कि मैम अपना आज का टॉपिक शुरू करें, मैं मैम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैम अभी करेंटली अपना PhD परस्यू कर रही हैं होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर से, और इसके साथ साथ मैम MD में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। और मैम ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA की डिग्री भी हासिल करी है। और साथ साथ में मैम का वर्क एक्सपीरियंस भी बता दूं। मैम ने 19 से 24 दिसंबर 2024 तक लैक्सन होम्योपैथिक कॉलेज में आयोजित सेमी में भाग लिया था। और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक था, उसमें मैनेजिंग कमेटी मेंबर रह चुकी हैं। साथ के साथ काफी सारे कॉलेजेस में मैम को एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर इनवाइट किया जा चुका है, जैसे कि गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, लॉर्ड महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और तात्या यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर में। और मैम एज अ पेपर सेटर भी वर्क करती हैं। और कई सारे प्रोजेक्ट्स में मैम को एज अ इंटर्न सुपरवाइजर भी काम करने का मौका दिया गया है। और मैम का अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक है जिसमें वो प्रैक्टिस कर रही हैं लगभग 2013 से। और मैम ने भारतीय विद्यापीठ से अपना PG कंप्लीट किया है। और मैम का MD का थीसिस टॉपिक था टू स्टडी द यूटिलिटी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। 2012 में मैम ने किया है ये। और MBA का प्रोजेक्ट था पॉलिसी प्रोसीजर फॉर इन पेशेंट सेफ्टी एंड टाइम गैप फॉर डिस्पैच ऑफ रिपोर्ट इन इमेजिंग डिपार्टमेंट, जो कि इन्होंने 2021 में किया है। और इसके साथ साथ मैम की अभी एक ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट भी चल रही है, जिसका टॉपिक है an observational descriptive interventional comparative study on a group of non-pregnant females suffering from iron deficiency anemia by constitutional treatment and biochemical treatment। और PhD का रिसर्च टॉपिक मैम का रहा है randomized control study for assessing the comparative efficacy of Elytris farinosa mother tincture with individualized homeopathic medicine in the treatment of leukorrhea in reproductive age group। मैम ने काफी सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं काफी रेप्यूटेड मैगजीन्स में। और मैम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना आज का सेशन शुरू करें, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी सिर्फ 50 मिनट्स है। तो मैम यू कैन स्टार्ट। मैम आवाज आ रही है आपको मेरी? प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। श्वेता मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपको मेरी स्क्रीन शेयर दिख रहा है? यस मैम। कैन यू सी द फर्स्ट स्लाइड? यस मैम। Okay. So I think good evening everyone, and I'll be directly starting with the topic of menopause, जिसको आप रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। So menopause एक बहुत important event है. It is a very important event of the woman's life, and there are so many physiological changes which are going on during this period. Right? They are affecting the female permanently. Am I audible? यस मैम। So basically, it is a natural biological process,
And whenever the patient comes to the OPD, so they generally come with the symptoms of hot flashes, or there are emotional symptoms, maybe sleep disturbance, or they come with different symptoms. Very few people now, in the early stages of menopause, they'll have hot flashes. Many people will feel that the energy is low, or there is some deficiency, or I'm not able to cope up with the daily routine according to my energy. So they take it towards aging and everything. So there are many effective treatments if we see in the market. There are allied therapies which are providing very good support during this period towards the health of the female, और जो भी hormonal therapies available है वो भी बहुत सारे लोग use कर रहे हैं, जिसको जो जिस तरफ भी जिसका bent है, they are using those therapies. Apart from the lifestyle adjustment, because people are more diverted towards yoga or healthy eating habit or intermittent fasting, so all these things are helping so that the patient can go through this stage in a very smooth way. So homeopathy is one of the very famous among all these. It's a beautiful alternative medicine system which is available, और इसका scope बहुत है इन सब cases को manage करने, because हमारी जो approach है, it is holistic and based on individual symptoms. So it helps the patient to completely improve as far as the quality of life is concerned, वो improve हो जाता है. Quality of life बहुत ज़्यादा, हाँ जी. मैम सॉरी बीच में बोलने के लिए, शायद साउंड थोड़ा स्लो है, प्लीज अपने सिस्टम से बढ़ा दीजिए. किन्हीं का मैसेज आया है कि साउंड बहुत स्लो है. मेरी तरफ से तो इट इज फुल. आपको आवाज आ रही है क्लियर? हाँ मैम, मुझे तो आ रही है. प्लीज हेडफोन्स यूज कर सकते हैं आप, आवाज जिनको नहीं आ रही है. उनका प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम है. अदरवाइज आई एम ऑडिबल. यस मैम. Okay. So even our WHO says that the length of the menstrual cycle and regularity, it also varies. और जनरली हमने देखा है जो मेनोपॉजल पीरियड है 45 to 55 की एज ग्रुप में आता है, एंड वर्ल्ड वाइड इट इज कॉमन. अगर हम डिफरेंट कंट्रीज का डेटा एनालाइज करते हैं एज पर स्टैटिस्टिक्स, तो कहीं पे 46.6% है, कहीं पे 52 इज द एज इन द वेस्टर्न कंट्रीज. The review study show the average age. In India, it is 46.6. Otherwise, in other countries, somewhere it is around 51, somewhere it is 52. So the studies which are done in different zones, वो सब हमें ये डाटा देते हैं. Now menopause हम तब कहते हैं naturally जब 12 months consecutively, means one after the other, कोई physiology या pathological change के अलावा हमारा absence of menses रहता है, then we say कि it is menopause. Now there are different stages and also there are different conditions जिसे फीमेल सफर कर रही होती है, और उस वजह से कई बार वैसे irregular हो जाते हैं menses. तो जब तक 12 months consecutively ये ना हो, stop हो menses, तब तक हम नहीं डिक्लेयर कर सकते. So basically menopause में क्या हो रहा है, the reproductive life फीमेल की वो एंड हो रही है, और जो हमारा ovarian follicle है उसकी एक्टिविटी कम हो रही है. So this is the final menses which is happening. अब it is derived from according to the text, इसका there are different Greek medical terms जहाँ से ये derive हुआ है. So they are different. Pauses is pause and men stands for month. It is like the menopause. So ऐसे ये term बनाई गई. So ये end of fertility के लिए traditionally monthly menstruation जब stop होता था, it used to be very openly discussed and everything, and now also people are much aware. So they know the symptoms and everything, and homeopathy has a beautiful way of dealing with this problem and not giving the hormonal therapy, which is later having a lot of side effects and spoiling the lining and everything, other hormones of the female. So time to time, now there is a term which is called perimenopause. So perimenopause means ovaries, they are producing less estrogen and progesterone, and these hormonal changes are leading to menopause. Gradually the periods become less and धीरे धीरे they stop. So there are different stages in which ये menopause आता है, एकदम से नहीं आता है. ठीक है जी. So menopause के throughout जो आपका ovulation है, जो eggs release हो रहे हैं, उनकी frequency भी कम हो रही है and duration is also less. So after menopause there is a period which is called the post menopause. पोस्ट मेनोपॉज का जो फेज है वो फिर कंटिन्यू होता है फ्रॉम स्टॉपिंग ऑफ मेंसेस टू द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द फीमेल.
And general age, if we see, I have already discussed, is 45 to 55. तो हम लोग कई बारी कहीं आपको टेक्स्ट में मिलेगा कि एवरेज एज इज 51. So it is variable. What the studies are showing and what is written in our text, थोड़ा बहुत variation according to data collection आ जाता है. यहाँ पे अब कई females में there is prior surgery या फिर hysterectomy हुई है या there is some issue with the fallopian tube and they have got operated. तो वहाँ पे ये early भी हो सकता है. तो कई सालों के लिए भी पेरीमेनोपॉजल पीरियड चल सकता है. और ये जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स हैं ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं अगर आपका प्रायर कोई सर्जरी वगैरह हुआ. So if I was talking about the data in India, I said it is 46.6. Now if we see the data of US, it is around 51. That is the age of menopause which the female experiences. Now what is the cause behind this is as the aging is there, तो ovarian follicles कम होने लगते हैं, granulosa cells ovary की कम होने लगती है. Estrogen also starts falling. Follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone, their production increases. Again, FSH level generally higher रहता है और LH level भी higher रहता है. So decline of estrogen level जब ये hypothalamic pituitary and very briefly I'll discuss this, ovarian axis जो है ये affect हो जाता है और endometrium की development fail हो जाती है. So there is an irregular cycle जिसको हम irregular menses बोलते हैं और धीरे धीरे ये cycle duration में increase होता रहता है. It is monthly और after 3 months the second period comes, then 6 months and धीरे धीरे close हो जाता है, right? और कई बारी अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर अंडरगो करते हैं, जैसे मैंने बोला आप हिस्टेरेक्टमी है या बायलेटरल हिस्टेरेक्टमी है, so in those cases also menopause happens. अब इसकी ट्रीटमेंट जो है, अगर if the patient has कोई और उसको साथ में डिजीज है, say she is having a breast cancer or she is on some medicines or immunosuppressant or something, फिर ये वेरिएबल है, या कीमोथेरेपी के सेशन चल रहे हैं उस हिसाब से भी ये वेरिएबल. So now we come on to the next slide. So there are initiatives by the government in public health which are taken. So perimenopausal women, उनको quality health services, communities को they should be told about that. So awareness part जो है menopause related information में वो फिर भी challenge है आजकल. Everywhere it is a challenge. It is not discussed generally within the families, communities or workplace or in the healthcare. And even if you are into an organization, there is no provision for a leave for menopause or something. जैसे pregnancy leave है, other leaves are available. But इसको ज़्यादा importance दी नहीं गई है. It is taken as a routine. It happens, but it is a serious setback to the health of the female who is going through it. So इनकी counseling and of these females is done, and so that the discomfort which they are going to go through for the next few years, they know about it and they will deal with it better. So healthcare providers, they are not trained regarding the perimenopausal period or the postmenopausal symptoms. So counseling of these people is important. Even if the healthcare workers are told वो लोग जाके patients के कोई ऐसा, there is no counseling given to the females or in the OPD also. Menopause के लिए कोई special counseling ऐसा नहीं दिया जाता है. We are just told that it happened. इससे ज़्यादा हम लोग इस पे discussion करते नहीं. So it is very important that sexual well-being of a menopausal woman is not to be overlooked basically. Now, many places the government doesn't have any particular inclusion of menopausal related diagnosis, yeah, okay, what is the correct approach, what kind of counseling should be given or anything. If there is any funding cannot afford. So ऐसा कोई provision है नहीं. So now we come on to the basically if we see our ovaries are affected, then the urogenital system, the bone health which is seriously targeted in a menopausal female, right? There is a bone constantly bone remodel, and there is a 5-step process involved like reabsorption है, production है, and the activity है. तो estrogen deficiency से क्या हो रहा है कि ये सब disrupt हो रहा है, and then osteocalcinogenesis cascade एक form हो रहा है जिसकी वजह से bone health भी deteriorate हो रही है. So this is the major hit which the female suffers. उसके बाद इसकी arteries पे भी effect होता है, जैसे हमारी layers of arteries.
generally the estrogen has a very good effect on the arteries, but during menopause deficiency की वजह से vasoconstriction of the vessels हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो बढ़ जाता है. अगेन इससे रिस्क क्या हो जाता है, थिक आर्टरीज हो जाती है एंड कार्डियोवैस्कुलर का रिस्क बढ़ जाता है. Now we have symptoms. There are various researches which are done and there are various common symptoms which are faced by females in different countries जिसकी studies हमारे पास है. Like the most important symptom are there. Now, sometimes the women with menopause, they have these vasomotor symptoms which are there, which I mentioned also in the slide, like uneven or missed period. Now, vaginal dryness is there, sore breast is there, there's a sleeping trouble, या emotion में कोई change है, or skin, mouth, other symptoms, they are present. Then you have fatigue, headache, weight gain, hair loss, or sex drive is reduced, headache, ये सारे चीजें कॉमन है. इसके बाद जो मेनोपॉज है, हम इसको 3 स्टेजेस में डील करते हैं, एक पेरीमेनोपॉज, एक मेनोपॉज एंड देन पोस्ट मेनोपॉज. अगर हम इस तरह से चलेंगे, वी कैन गिव बेटर रिजल्ट्स. अब पेरीमेनोपॉज इज अंटिल द प्रॉपर मेनोपॉज कम, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का जो लेवल कम हो रहा है, दैट वी विल गेट. देन इज द मेनोपॉज. इफ फॉर अ ईयर आपके कोई पीरियड्स नहीं है, दैट मींस एग रिलीज बंद हो गया है एंड द एस्ट्रोजन हैज फॉलन सफिशिएंट. पोस्ट मेनोपॉज इज जहाँ पे बीएमएस के सिम्टम्स जैसे हॉट फ्लैशेस हैं, आपके नाइट स्वेट्स हैं, ये सारा रहेगा. और ईस्ट्रोजन जैसे जैसे आप टुवर्ड्स पोस्ट मेनोपॉज जाएंगे, आफ्टर द मेनोपॉज इज डन, स्लाइट इंक्रीज इज देयर. So now we will discuss about the symptoms in detail, little bit detail. तो हॉट फ्लैशेस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है. 75% फीमेल्स में ये चीज देखी गई है एंड दे आर देयर. कई बार रेडनेस होती है फेस की, या फिर एकदम से जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज सेक निकलता है हाथों से पैरों से, या स्वेट इंक्रीज हो जाता है. देन देयर आर नाइट स्वेट्स, दैट इज हॉट फ्लैशेस इन द नाइट. तो अनप्लेजेंट फीलिंग से फीमेल उठती है. देन द पीरियड्स of the female, they are irregular. So sometimes PMS with no bleeding भी हो सकता है. कई बारी it is accompanied with mood swings, वो भी हो सकता है irregular period में, normal जैसे होते हैं. So ये भी देखा गया है कि around 30% females also suffer with mood swings. Now extreme version of mood swings may be seen during the menopausal period. Then since the estrogen maintains the lubrication of the vagina, so that dryness is also there because now the estrogen is deficit and there is pain and discomfort because of that dryness. Then we'll talk about the breast soreness. Because of this reduction in the level of estrogen, typically menstruating या फिर pregnancy या menopause, इन सब में ये जो हो रहा है, so the breast also becomes sore. जैसे pregnancy के period में होता है. Similar symptoms may be seen. It is not compulsory every female will have the symptoms, but set of these symptoms, you can figure out like good 30-40 symptoms are there, जिसमें से 20 everybody experience. Sometimes there is dryness of the mouth and decreased salivation and more burning mouth syndrome को बोला जाता है. So more water intake in the female and everything, the skin dry. So this is also with which the female has to struggle. So many females, I told you about the bone health. So many females are upset with the joints or the body aches. They never go for them. The musculoskeletal system is at a state. Then we have the digestive problems in the system. Now, digestive system is supposed to be very sensitive in your body. And the first thing, if anything happens to the body, your digestion goes, or if there is a change in hormone, or you're having new medication, or you're on a nervousness pattern, you're constipated, or you have diarrhea or cramps, so your digestion will go. Indigestion, bloating, these are common symptoms. Then sometimes sudden hot flashes come. एक हो गया normal hot flashes routine में आना, और कई बार इतना ज्यादा आ जाता है, makes the patient very uncomfortable. Then they may suffer from other problems like they have a very sweetish taste in mouth, या फिर tingling होने लगती है extremities में, या numbness रहती है feet, legs, arms, they feel that numbness tingling inside. Skin is very much affected sometimes because
of the low estrogen level, it also affects the collagen level, and your skin becomes less firm, it is less smooth and dry, itchy. That is what happens with the fall of these hormones. Fatigue is a symptom which is seen in most of the females. Anxiety, mood swings are seen in all the females who suffer from this. Now, sleep patterns are grossly disturbed. They have insomnia. Sometimes they have a sleep for 2 hours or 4 hours, or they don't even get sleep for days. So for that reason, the family has to be very supportive and understanding that this is a physiological change, and just that little understanding is needed. Then is the hair loss. Again, your hair, since the collagen is gone, so hair loss again, hair thinning starts, hair falling starts. The brain doesn't work all the time because of low level of estrogen, you will end up with lack of focus. You are more concentrated towards your body ailments instead of your what is going on with you. You are only confused with that and how you can help yourself out. Then weight gain. Sometimes people start taking hormonal therapies, start taking contraceptive pills. उसका अलग problem हो जाता है. They start gaining weight. Again, bloating is very important symptom. This is the first symptom. If you're not having your period, you start bloating. So when this starts coming, so you can take it as that menopause is nearby. Then again, there is a urinary disturbance which may be seen. That's just stress incontinence जिसको वो भी देखा गया है. Since your hair loss is there, you have an itchy skin, then you may have skin dryness. So another thing which comes up is brittle nails. वो भी हो सकता है. Generally, it is in the childbirth period. Then we take extra supplements and everything. So it is actually related to the menopausal process also. So withdrawal of the hormone leads to many things, and it can also dehydrate your nail. Low levels of estrogen, it can dehydrate. Then there are allergies which the patient has during this period. Why? Because the immune system falls. So lower estrogen levels, sometimes it makes the patient very nervous, and they have these irregular heartbeats and palpitations. So these are a set of symptoms which many patients will come. Then irritability, most important. Everybody will say the patient herself realizes that I'm very irritable these days. I'm like on petty issues I am creating. And patient को सब समझ आ रहा होता है female को, but she can't help it. That's why she comes to us. Then sometimes the patient panics that why I'm not getting relief from this menopause. Even if we give the constitutional medicine, ekdam relief nahi aaya, they start panicking. So very, very, the most hazardous which I have seen in my clinical practice is the bone osteoporosis, which is a major problem which many people suffer gradually. The bone density drops. So this bone density, we say after delivery also you should take supplements. Similarly, during the menopausal period, they should be advised to take calcium and other supplements which are important just so that this period goes smoothly along with our medicine. So for this, we don't have a particular test which is done or anything, but we can see that there is an elevated, if there is an elevated FSH level, more than 40 ml per milliliter, MU per milliliter. So that can be seen. So that is slight indication of menopause. And additionally, you can see estrogens, androgens, and contraceptives. These all alter the lab result. So there's no specific indication. Now, main concern in this is your osteoporosis, which is a concern not only in India and other countries also. So they go for a dual energy X-ray, DEXA scans, X-ray optometry. So they go for that, and T score is calculated. So if it is 1 to 2.5, then we say it is osteopenia. If the T score is greater than 2.5, then we say it is osteoporosis. So this is how they. Now I talked about the genes, the immune system. These are affected. Premature ovarian failures, when your ovaries prematurely stop releasing eggs, and then also premature ovarian failures can lead to menopause. And induced menopause is when we remove due to any cancer or endometriosis or chemotherapy, this we already discussed. Now, menopausal age, we say hormonal birth pills, if you take, they alter, but there's no specific study which says that because of this the menopause is
delayed or it is preponed or there is something. Even the premenopausal and the early perimenopausal women, according to different race and age, they have different experiences. So SWAN is an organization for this who look after the different females from different age, and they experience menopause, that the menopausal age of the females came out to be around very similar in the same range. So hence it is not much effect. Then is the follicle stimulating hormones. We know that it goes up as towards the menopause. Estradiol, it will go down. And sometimes your thyroid gland also affects your periods. This is a very important thing. We should go for this hypothyroidism and all, because these investigations will help you. There's no specific investigation for menopause, but other parameters should be seen as far as I know. So menopause ki treatment ke liye other systems, they have this hormonal replacement therapy, which is given. So the hormone which the body is deficit of, they give drugs and combinations so that hormone keeps on. It's like a supplement, and it will act on the bones and everything. But these hormones have the side effect. They take you towards cancer, they take you towards other health problems. But a very lowest dose for a short period is given as per medical ethics. Then a topical hormone therapies in an estrogen cream or a gel for the dryness. These are all advised. So basically, along with our constitutional medicine, what we suggest is very important is the lifestyle change. Right? If you are having vasomotor symptoms, say hot flashes, so have cold water or sit and sleep near a fan. Wear some cotton clothes or loose clothes will keep you cool. Right? Then a vaginal lubricant in case there is dryness and there is pain during intercourse. Please use a lubricant. And exercise will help to prevent any other side effect if you're on a hormonal therapy, like any heart disease, or if you're going through diabetes or osteoporosis. So pelvic floor muscle exercises are very important because urinary incontinence may be there, or you have some symptoms. Since the age is prolonging, maybe you are going towards the prolapse or something. Kegels exercises are very important. Lifestyle should be simple so that we can sustain for a longer period of time. No need to smoke, or in the early menopause, sometimes people are on tobacco or smoking. So it all leads to increased trouble during these periods. They should refrain from. If you say agar you are on alcohol or something, you're on a habit or occasional. So for your sleep, if you are taking or there is any other, you need to limit everything. Food should be healthy, and deep breathing or a relaxing meditation, it will help you to go on with this process. There is not a specific menopausal diet which I would suggest, but all healthy things and more nutrition is to be given to the body, and that will help you to go through. There are many studies which have different results, and but acupuncture and this yoga and Tai Chi, these are all ways to relieve the menopausal symptoms. So there are certain drugs which are approved by the FDA for hot flashes, but they are for depression and everything. If that is happening, then that should be taken with help, proper consultation of a psychiatrist. Similarly, for medicines or there for osteoporosis also, it's very important to take care of your health. So it is a normal part of aging, and it should be treated like that. It's not a disease, but it has a risk of associating with other diseases, mostly your heart and osteoporosis. So there is a HRT which we talked about, but again, that will increase the risk of breast cancer. So you should refrain as far as possible. Bone loss generally in osteoporosis, if we talk about, it increases for the first 2 years. And then you have this dual X-ray DEXA scan which is done to see that how much risk of osteoporosis you have or what is the strength of your bones. So future bone loss and fractures can be avoided. So mostly the females have the issue with joints and bones. So we give medicines which are prescribed by calcium and vitamin D supplements are given. Then calcitonins and parathormone, all these things are given. About the lifestyle, we have talked already. Then the treatment of night sweats and flashes, then for that they again have a therapy which they give and a drug which they give.
In homeopathy, we don't go by that. We prescribe for everything. Also, basic thing the female should take care that wear light clothes, have your water sufficiently, properly, avoid caffeine or excess tea or excess alcohol. So this all will help. And if there is an irregular period, so we need to watch that. There is a dryness in the vagina, we need to watch that. Sleep pattern, if you need to now work on your sleep pattern, it is important that most of the days you don't sleep in the daytime so that you get proper sleep at the night. So you can change your routine. Try to keep a biological clock fixed. Don't have very large meal right before your bedtime. It will lead to bloating or acidity. So don't have that. Right? So now homeopathy, if I talk about. Homeopathy is a beautiful system, and before I start with the homeopathic part, let me just discuss the complications. So I talked about the complications. I think bone loss, I've talked about heart disease. Then you have bladder and bowel. You might not feel that everything is okay. Sometimes wrinkles and poor muscle tone. Vision may get affected, right? Sometimes there is macular degeneration or a tiny spot may appear. Then sexual changes may be there, vaginal dryness, libido may be there, right? And once the menopause is there, we know the pregnancy now cannot happen. But STDs can still get transmitted. It is very, very important. So we all should be aware. Now there are many books and a lot of literature, but as far as the clinical thing is concerned, so very important remedy if we see, one of them is lateces. There are frequent hemorrhages, hot flashes, and perspiration is there, severe headache is there. Another very good remedy for premature menopause is absinthium, right? So it is very important to give medicine as per the symptom based on individualization and with a holistic approach. So complete health of the patient is very important for us. Apart from the what is the individual susceptibility and what is the underlying cause of it. Then you have aesculus along with hemorrhoids if there is worse period during the climacteric. If there is any bleeding or shooting pain in the back, we think of aesculus. Then you have a very beautiful remedy called Aquaria vulgaris. Again in the female is in the climax with vomiting of green substances there in the morning, then we think of this remedy. Again, Argentum metallicum if there is a climacteric hemorrhage. If boric acid is given where there are excessive hot flashes. Then we have capsicum annum. Again, climacteric disturbances and burning is there, and uterine hemorrhages along with menopause. Then we have collinsonia. If there is a lot of nervousness, palpitation along with menopause, then we can think of collinsonia. Digitalis, again, if there is nervous weakness during the climacteric period, we can think about digitalis. Now you have crotalus horridus, climacteric condition or period, there is flushing and sinking feeling during the menopause, it is written. Apart from this, there is a beautiful remedy called simicifuga. Simicifuga says it is worse in the puberty and the climax, both these periods. So it is also given. Glonionum can be given if there are hot flashes, nausea, vertigo, or swelling in the feet. Helonios is very important. It is given in climacteric period, and there's an alternate sensation of heat and cold. Even given in cases of leukorrhea or there's a ovarian pain during climax towards one side, then also we give this. Then we have creosote given to the old woman where there is a post-menopausal period. So there we can think of this remedy. Lachesis we have talked about. Wherever there is a complaint of headache or there's a climacteric period complaint, we think about the lachesis, or there's a constriction feeling or swelling is there. In those cases, then it's a very important remedy for uterine hemorrhage and climax. That's your lorocereus. It is a rare remedy, but it has very good results in these cases.
Mancinella is important. If your mental symptoms like depression is there during your climacteric period, or there is any other problem regarding the sexual part, we think of this. Again, Murex is towards depression, or she's saying Ovinum is a medicine. Again, am I audible? Yes, ma'am. Okay, I'll continue. Ovinum is another medicine. Again, in nervousness, climacteric period. Now, those females who have skin disorders along with weakness in ovaries and they have the menopausal symptoms, there we can think about. Then you have the phosphoric acid, very important, flushes with vertigo, hot flushes and vertigo. So pulsatilla, our favorite remedy, which is there. So it ranges over in all the female complaints from puberty up to climacteric. And generally when we do the software things, so these polycrests start coming in the first 4 marks, highest marks. Sabina, again the patient is worse in the climacteric period. And overwork is there, 6 children is there, and other things are there. She's also anemic and exhausted. All these symptoms may accompany. Also, it is a remedy which is indicated in hemorrhages. Then is the sepia. Sepia is very important in menopause, and again flushes of heat. There are violent stitching pains which are present, and there is a lot of weakness, tendency to faint. Again, skin symptoms may be highlighted in case of sepia, and hair fall, chronic headache. All these things are there in sepia. Painful stiffness in the uterine region, and then other complaints may accompany. Then is Ponium and Murex. They are also very good remedies you can think of. Murex is in if the female is nervous or she's in the bearing age, also it is indicated. If there is history of abortions, then also it is indicated. In the climacteric period, it is also indicated. For the menstrual irregularities, it is also indicated. Right. Now coming on to sulfur. If there is a single hot flashes in climacteric, maybe they can be in head, hands, feet, or organ sensation in the stomach, then we go towards sulfur. Then there is another remedy which is ambulus moscato. Again, nervous, hysterical subjects indicated for, and least exertion, even with thinking also, they aggravate about their condition. There are so many remedies actually. Then is Tridion also. Hysteria is there, and then at the puberty and headache is felt. Then you have another remedy which is Vinca minor. Now, Vinca minor has a symptom that menses just flow like a stream. So if there is a lot of weakness because of that excessive bleeding before the climacteric period, so that weakness is catered for. Then Vipera is another remedy which is also indicated for hemorrhages, and there is discharge with clot which is present. There is a remedy which is given called Bisbaldin aqua. In this, it is written that menses return after the climax. Now, sometimes what happens is there is again the menses return after the climacteric period is there. So these are the remedies which are important. Now, bone loss, which it is a major concern, which I would like to say, it stays for long. And actually, after the menopausal treatment, the patient generally has an issue with dealing with his or her bones. So the speed with which the researchers have indicated the bone loss is there, where 20% bone loss happens approximately in first to 10 years, which are for the females, 1 in to 10 females who are over the age of 60. And this is the worldwide data. So 1 in 2 menopausal women, they have osteoporosis, and they will suffer from fractures or a pain or mobility issues or functioning over a period of lifetime, जिसकी वजह से the mortality increases or the disability or debility of the female is there, and there is a decreased quality of life. So it is very important to decrease the rate of fracture. For that, even if with our medicines we need to give supplements, there is no harm.
Osteoporosis, we have discussed. Now, vitamin D and calcium, they play a very important part. So it is important to give vitamin D and calcium. Now, cardiovascular disease is another important thing. If it happens generally, cardiovascular is seen menopause, we have 45 to 55, and when this estrogen is withdrawn, so eggs are not released, and the progesterone and testosterone also go down. So fall of estrogen, that leads to the symptoms of the menopause. So estrogen, it has a great effect because it levels the basically arteries, and they become now narrower because of the fall of estrogen, and so you are at a risk of developing a coronary heart disease or a heart attack or a stroke. So many people start gaining weight because of the HRTs and all. That has to be controlled. After the menopause, your cholesterol levels need to be checked. You have to keep your blood pressure under control, and there should not be any other complication which is not under control. Please have proper medication as you are aging. Now, there are certain myths that heart palpitations are a symptom of menopause. So we cannot take it lightly. Nervousness, yes, is a symptom. Palpitation for some time. But if you are having a constant pain around the area, then just remember that it may be because of the changing hormones. But if it doesn't go for a long period, then you need to check your hormonal levels also, your cholesterol levels also, and you might need an ECG. Now, perimenopausal period, yes, pregnancy is possible. These are the questions which come up generally with the patients. And contraception, generally, after 12 consecutive months, it is not required. But in the perimenopausal period, it may be required. So no major issue if you are the regular cycles, conception can be done. One more important remedy I will discuss with you. I think I skipped this one. Kali carb. Kali carb is generally given if there is a fibroid along with a growth is present, or puja is generally given if there is a growth along with the menopausal symptoms in the climacteric period. Right, this tumor, it will take time to cease. And also, I would like to request everyone that not every fibroid or growth can shrink. Right? Many people claim that in homeopathy, even if it is a big tumor, what I'm seeing, they claim that patient keeps on running from one doctor to another. That since the menopause is there, estrogen withdrawal is there, but we need to see the size. We need to see the size of that growth, and we also need to see whether it is benign, whether it is malignant, and frequent ultrasounds will be needed if you are treating that growth with your medicine. You cannot leave the patient by just giving it will reduce by itself and now we will do ultrasound after 6 months. No, 3 monthly ultrasound is to be done. So that ethical thing we have to take care of. If it is too big and it might rupture, or there might be an emergency, or there might be a pedunculated growth which might get strangulated inside. So it is very important not to misguide the patient, but to rightly counsel the patient. We can help to a lot of extent, but somewhere if we cannot help, that is okay. Right? Instead, after coming, then the patients get disappointed, and then they go and then they tell the other person that they have been not taking care of my fibroid, only treating my menopause. We don't treat differently. It's something for menopause, something for fibroid. So it is a holistic approach. So we need to make the patient understand this. And if there is excessive bleeding towards completion of menopause, gradually the bleeding pattern should reduce. Now, sometimes there is excessive bleeding, so we need to find out through ultrasound and other means. There might be a growth which is ruptured, or there is some lining, or there's some injury. So that has to be figured out. So investigation part is always there. There is no specific test or investigation for menopause. But yes, other than that, for the health of the female, we need to see the other parameters, like your bone density should be known during that period. Vitamin D, calcium should be known. Then your whether you're anemic or not, that will really affect your symptoms. So all these things, sometimes the supplements would only secure a healthy female during that period. Sometimes the anemic females, they have the anemia symptoms and they start confusing it with the menopausal symptoms.
all these things need to be cleared, so that proper investigation is very, very important as far as my concern. That's all for today from my side. Thank you so much for having me here with you all. Hello. Yes, ma'am. Yeah, I'm done with my presentation. Okay, ma'am. सर आप कुछ बोलेंगे? हेलो, जी सर. लेक्चर खत्म हो गया क्या? जी सर. ओके, तो मैं तो सुन रहा था, बीच बीच में थोड़ा सा इंटरप्टेड था मेरा ये इंटरनेट. मेनोपॉज के विषय में एक बीमारी तो नहीं है क्या? तो क्या मानते हैं मेनोपॉज को? मेनोपॉज को बीमारी तो नहीं है, लेकिन मेनोपॉज के समय में जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, और उसको पास ऑन करना और उस समय में नॉर्मल वे में बहुत लोग नहीं कर पाते, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के सोसाइटी में देखने को मिलता है. तो इसको समझने का कोशिश करना, और मैडम इशिता जी ने पहले भी इस तरह से कभी अच्छे प्रेजेंटेशन दी और कई एक दवा के विषय में लोगों को जानकारी दिया है. ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है, और मैं मैडम को बधाई देता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, इशिता जी के लिए. और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से और किसी को कोई क्वेश्चंस करना हो मेनोपॉज के संबंध में. बहुत लोगों ने साउंड के विषय में मेंशन किया है कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आवाज़ तो मेरे को भी ठीक मिल रहा है. तो सबका बरसात का है, कोई कहीं ना कहीं तो कुछ लोकल प्रॉब्लम होगा जिसके कारण कि नहीं सुनाई पड़ रहा. सभी लोग प्रॉब्लम नहीं किए, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं कि साउंड जो है तो ठीक से ऑडिबल नहीं है. थोड़ा सा इसको हम लोग को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहिए. और तो आपका काफ़ी अच्छा रहा है. मेनोपॉज के समय में दो फेज लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एक फीमेल लाइफ में एक होता है मेनार्क और मेनोपॉज. मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर मिस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है. इसलिए मेनोपॉज का प्रॉब्लम और मेनार्क का प्रॉब्लम ये फीमेल लाइफ में एक एडजस्टमेंट है, चेंज ऑफ फेज ऑफ द लाइफ है ना. जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपका फिजिकल फंक्शनिंग में चेंजेस हो रहा है, उसके कारण जो चेंजेज ऑफ द लाइफ हो रहा है, ये सिचुएशन जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और इसको समझ करके ही हम लोग कुछ आगे की दवा कर सकते हैं. और जब मेनोपॉज के समय में ट्रीटमेंट करना हो तो लोकल ट्रीटमेंट को लेने से बजाय मेरे हिसाब से ये होता है कि आप वहाँ पर एक्टिव ट्रीटमेंट होलिस्टिक ट्रीटमेंट करें. आप उसका लाइफ स्टाइल को देखिए. बहुत सारा मेनोपॉज का जो सिचुएशंस होता है स्ट्रेस के कारण होता है ना. स्ट्रेस के कारण मेट्रोर्जिया हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगना, पेनफुल हो जाना, ये सब सारे कंडीशन जो है तो बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण हुआ करता है. खास करके मेंटल हार्मोनल चेंजेस का जब भी संबंध होगा तो उसमें मेंटल स्टेटस का अध्ययन करना जरूरी होता है. मैं उन फीमेल्स में ज़्यादा देखता हूँ जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती हैं. उस फीमेल में आप देखिएगा कि वहाँ पर आपको मेनोपॉज में भी प्रॉब्लम होते हैं और मेनार्क में प्रॉब्लम होते हैं. आज चूंकि हम लोग मेनोपॉज की चर्चा कर रहे हैं तो आज मेनोपॉज पर स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि लाइफ के जो एक ऐसा कगार है जहाँ की आप एक अपना युवा अवस्था से वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं. तो युवा अवस्था से वृद्धावस्था की ओर जाने के समय में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को झेलने के लिए चेंज ऑफ लाइफ सिचुएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. हमारा जीवन जो है बना हुआ है, ये जीवन कई एक जंक्शन से क्रॉस करना पड़ता है ना. जन्म लेते हैं, टॉडलर एज में होते हैं, रेंगते हैं, रेंगने के बाद में फिर पैर पर खड़ा होते हैं,
पैर के बाद में फिर एडोलेसेंस होते हैं। तो लाइफ साइकिल्स के अंदर में और मेनोपॉजल में भी मैंने देखा है, आप अगर डिटेल हिस्ट्री में हम लोग लेते हैं केस टेकिंग में, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा जानकारी मिलता है। और मेरी आदत बनी है कि हम लोग डिटेल्ड केस हिस्ट्री करें। तो मैं देखता हूँ कि मेनोपॉज के समय में उन लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम है जहाँ की चेंज ऑफ द लाइफ सिचुएशंस को फेस करना, परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन को आसान सरल नहीं लेकर के कठिन मानना। कहते हैं ना, एक हम लोग का न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया समझते हैं ना, एक स्थिति में बने हुए हैं और दूसरी स्थिति में जाना है। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में जो परिवर्तन में होता है उसको इनर्शिया कहते हैं। हम लोग सभी की मानसिकता होती है कि हम लोग एक स्टेट, एक इसमें रहे, एक स्टेट ऑफ द एक अवस्था में। तो परिवर्तन, अगर आप परिवर्तन को अच्छा से नहीं समझेंगे तो परिवर्तन आपके लिए कठिन हो जाता है ना, परिवर्तन कठिन हो जाता है। और इनर्शिया के तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को और इनर्शिया ऑफ द मोशन दोनों को ब्रेक करना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा जरूरी होता है। दोनों को बदल करके आप ये कर सकते हैं और मेनोपॉज का भी एडजस्टमेंट हो सकता है। और मुझे तो ये लग रहा है, अंकिता जी आप कुछ बताएंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस केसेस में, इस तरह के केसेस में? सर मेरा तो अभी ऐसा कुछ स्पेशल मतलब नहीं रहा है अभी तक। जो भी मैंने 2-3 केसेस देखे भी अगर हैं मेरे कॉलेज की पीयूपीडी में, तो उसमें हम लोगों ने मतलब मेंटल्स के बेसिस पे ही लेकेसिस और ऐसे पल्सटीला ये कॉमन रेमेडीज ही दी थी। और काफी बेहतर भी हुआ था उन पेशेंट्स का कंडीशन, जो भी उनको जैसे कि हॉट फ्लशेस और घबराहट और जो वो टेंशन वगैरह की चीजें आ रही थी, वो उसमें काफी बेहतर काम किया था ये मेडिसिन ने। आप लैकेसिस पर हम लोग क्यों जोर देते हैं, लैकेसिस पर क्यों जोर दिया जाता है? सर मुझे लगता है हेमरेजिक डायथिसिस भी है उस मेडिसिन में। और डिस्चार्जेस से जो जुड़ा हुआ है मेंटल, तो ये डिस्चार्जेस की बात आती है तो हम लोग लैकेसिस पर ज्यादा सोचते हैं ना। कोई भी डिस्चार्जेस, इम्बैलेंस इन डिस्चार्ज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज? डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? लैकेसिस में एक फ्लो मेंटेन करना चाहता है, और लैकेसिस का जो प्रॉब्लम होता है वो फ्लो में बाधा होता है। वो वहीं पर लैकेसिस की बात भी आपको आता है कि लैकेसिस भी चाहता है कि हमारा इनर्शिया बना रहे, एक स्टेटस में पड़ा रहे। इसीलिए लैकेसिस में भी आपको जितने भी है, जैसे ही वह फ्लो में, और लाइफ मोशंस की बात करेंगे तो बोलते रहने से क्या होता है कि उसका डिस्चार्ज, जैसे बहुत से लोग देखेंगे डिस्चार्जेज को बहुत तरीके से बताया जा सकता है। एक तरीका ये होता है कि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेज हो गया। अगर बहुत जो आदमी बोलने की इच्छा होती है, बोलना सप्रेस करते हैं, तो वह भी डिस्चार्जेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो और शरीर के अंदर में कोई भी डिस्चार्जेज को अगर बाधा पहुंचता है तो उसके कारण आपको वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज को समझने की आवश्यकता है। और वहां पर मेंटल, क्योंकि आप एक लोकलाइजेशन पर ले करके दवा करेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि लोकलाइजेशन के आधार पर एक जनरल वे में ले सकते हैं। लोकल को लेकर के आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग पेशेंट में लाना पड़ेगा, जनरल अंडरस्टैंडिंग को लाना पड़ेगा। हम लोग कभी भी जब भी पेशेंट देखते हैं तो पेशेंट एक लोकल प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरा ये हो रहा है, लेकिन उस जनरल को ब्रॉडर सेंस में ले जाना हम लोगों का काम होता है, डॉक्टर का काम होता है। आज भी मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था। आज मैं क्लास कॉलेज में पढ़ा रहा था, नोट्स के जर्नी के विषय में चर्चा कर रहा था। वहां पर मैंने देखा कि क्रॉनिक डिजीज में एनिमन का जो क्रॉनिक डिजीज है वह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना ब्रॉड सेंस में पेशेंट को देखते हो, कितना सीमित दायरा से निकाल करके कितना ब्रॉडर सेंस में देखते हो, तो वह आपको पेशेंट का दायरा समझ में आने लगता है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, ये केस टेकिंग का और केस टोटलिटी को डेवलप करना। हम लोग कहते हैं मेंटल सिम्टम्स, ये बहुत से वेग होता है। मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स अगर दोनों का मैचिंग नहीं है तो फिर तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के
इस केस एनालिसिस में। तो इसको करना चाहिए। और मैडम हैं अभी डॉक्टर इशिता जी। डॉक्टर इशिता जी, यू आर हियर? मैडम हैं? सर आई थिंक मैम ने लीव कर दिया है या लीव हो गई है गलती से। लगता है ज्वाइन नहीं की है ना, फिर लगता है निकल गई हैं या किसी कारण से होगा। ठीक है, तो हम लोग को इसमें ये ध्यान में रखना चाहिए। और हम लोगों का समय भी अब समाप्त हो रहा है। मैं आप सबों को एक संदेश देना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब आज बहुत से लोग नए आज आए हैं और बहुत सारे लोग को इस सेशन का समय का सीमा समय का जो है जो परिवर्तन हुआ है उससे अवगत नहीं है। तो इससे जागरूक होने का आवश्यकता है। जानना पड़ेगा कि हमको अब 7 बजे नहीं 7:30 बजे हम लोगों को यहाँ पर आना है, क्योंकि यह आगे का ये यात्रा है हम लोगों का 7:30 से लेकर के 8:30 तक हिंदी में होगा। इस बात को सभी लोग नोट करें। और यह आप लोगों के सुविधा के लिए ही किया गया है कि क्लिनिक की व्यस्तता थोड़ी सी कम हो जाए, तो उसके साथ में आप आसानी से बैठ करके सुन सकते हैं। क्लिनिक की व्यस्तता को ध्यान में रख करके किया गया है। 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 और 9:30 से 10। ये मैनेजमेंट के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों के सुविधा के लिए ही इस चीज को यहाँ पर किया गया है। तो आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। और डॉक्टर अंकिता जी, आप इसको कंक्लूड करते हुए डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर सकती हैं। जी सर। हमारी स्पीकर किन्हीं कारणों से लीव कर चुकी हैं पहले ही, तो उनको तो वोट ऑफ थैंक्स नहीं दे सकती हूँ, बट जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया हिंदी सेशन को, इसमें भाग लिया, उन सभी को धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और जैसे कि सर ने भी बता दिया है, आज 1 अगस्त से हमारा टाइमिंग चेंज हो चुका है। हिंदी सेशन 7:30 से 8:30 बजे तक होगा। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक इंग्लिश सेशन होगा और सेम लिंक से ही 9:30 बजे से 10:30 बजे तक लोकल मलयालम सेशन होगा। तो जो भी लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं इंग्लिश सेशन के लिए, वो इसी लिंक से जुड़े रह सकते हैं। और अब इसके बाद हमारा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक इंग्लिश सेशन है, जिसको धनेश सर मॉडरेट करेंगे। और उसके लिए मैं उनको माइक हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सर।